January 8th, 2026. The city was drowning under a relentless downpour. The old railway junction, usually alive with noise, was now deserted, just flickering lights and shadows. The rain had driven everyone away, leaving the platforms eerily silent. But fate had other plans. In the far corner of Platform 4, near a dim cargo bay, lay a body. A man, face down in a puddle of rain and blood, his identity a mystery. The rain washed away evidence, indifferent to the crime. A lone railway guard discovered the corpse, his flashlight catching the glint of a shoe, then the stillness of death. He radioed for help, voice trembling. News spread quickly among the skeleton staff. The only witness was the rain, trying to erase the memory of violence. Who was this man? Why here, on such a night? The questions hung heavy in the air. The stage was set for a mystery, one that began with a silent corpse and the unforgiving rain. Police sirens pierced the storm. Inspector Amrit arrived, trenchcoat pulled tight, eyes sharp from years of chasing shadows. The platform was cordoned off, the body under a white sheet, forensic lights flickering in the gloom. Amrit crouched, scanning for clues. No struggle, no weapon, empty pockets. This wasn't a robbery. It was a professional hit. The rain had erased almost everything. Amrit questioned the guard, noting every detail, time, position, anything unusual. Every crime scene tells a story, and Amrit listened closely. The forensics chief reported a single deep stab wound, quick, efficient, deadly. The victim's wallet and phone were missing, making identification impossible. All they had was a nameless body and a crime with no clear motive. As the rain poured, Amrit felt the weight of the case. He stood at the start of a long, dark tunnel, guided only by instinct. The mystery had found its detective. The city's silence was broken only by the storm and the promise of secrets. The investigation had begun. The investigation began, but the storm fought them at every turn. Amrit's team scoured the junction, bins, corners, waiting rooms, searching for any clue. The rain made it nearly impossible. Evidence vanished, washed away. Amrit found nothing but soaked newspapers and lost toys. The killer had left no trace. This was the work of a professional, using the storm as cover. Forensics struggled too. DNA and footprints lost to the rain. They collected fibers and samples, but it was a long shot. Without a name, they had no starting point. The victim was a ghost, a John Doe. As dawn broke and the city stirred, the crime scene remained a stark reminder. Amrit knew he needed a new approach. He had to find a different thread to pull. With no physical evidence, Amrit turned to digital clues. In a modern station, every ticket, every camera, every transaction is recorded. Amrit's team sifted through ticket machine and booking counter logs, searching for anomalies. They focused on late-night tickets, especially those for Platform 4. Dozens of names, but Amrit sensed something unusual would stand out. A junior constable found it. Not a purchase, but a cancellation. A ticket for the 10:30 express, cancelled at 10:25, just before departure. The cancellation happened at a machine on Platform 4, minutes before the estimated time of death. It was a last-minute change, a clue that felt like a turning point. Amrit's adrenaline surged. This was the thread he needed. The cancellation log gave them a booking reference. For the first time, the victim's story began to take shape. The digital trail was their first real lead. The investigation shifted from the rain-soaked platform to the cold glow of computer screens. The mystery deepened, but now they had a name to chase. The cancelled ticket told a story, a journey interrupted, a life cut short. Using the booking reference, police identified the victim, Rajan Sharma, a mid-level accountant. With a name, the investigation opened up: address, family, workplace. Rajan was quiet, unassuming, with no criminal record or known enemies.
But Amrit knew appearances could deceive. Why was Rajan leaving the city in such a hurry? Who wanted him dead? Did he cancel the ticket himself? Or was he forced? The machine required a booking reference and mobile number. Was he coerced? Or did he spot danger and try to change his fate? That single digital entry was the moment Rajan's fate was sealed. The cancelled journey became the prelude to a cancelled life. Amrit dispatched teams to Rajan's apartment and workplace, searching for answers. The case was no longer about a nameless victim. It was about Rajan Sharma and the secrets he carried. राजन शर्मा के अपार्टमेंट की तलाशी में एक पेन ड्राइव मिली, फॉल्स बॉटम ब्रीफकेस में छुपी हुई। साइबर टीम ने फाइलें डिक्रिप्ट की, स्प्रेडशीट्स, दस्तावेज, गुप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। राजन एक व्हिस्लर ब्लोअर था, रेलवे के ठेकों में घोटाले के सबूत इकट्ठा कर रहा था। फाइलों में बड़े ठेकेदार विक्रम सिंह और उसके नेटवर्क का नाम था। बिड रिगिंग, घटिया सामान, फर्जी इनवॉइसिंग, सब दर्ज था। ऑडियो में विक्रम सिंह के लोगों की गैरकानूनी बातें थीं। राजन ये सबूत राजधानी ले जा रहा था, अधिकारियों को सौंपने। उसकी हत्या एक सुनियोजित साजिश थी ताकि वो हमेशा के लिए चुप हो जाए। अब अमृत के पास मकसद और मुख्य संदिग्ध था। मामला रहस्यमयी हत्या से बदलकर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग बन गया। राजन अब सिर्फ पीड़ित नहीं, एक हीरो था जिसने सच के लिए जान दी। अमृत के लिए अब ये सिर्फ केस नहीं, न्याय की लड़ाई थी। उसे विक्रम सिंह को बेनकाब करना था, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। मकसद और संदिग्ध सामने थे, अब बारी थी सबूत की। सीसीटीवी फुटेज। अमृत ने प्लेटफॉर्म 4 के हर कैमरे की फुटेज मंगवाई, खासकर हत्या से पहले और बाद की। टीम ने घंटों धुंधली, बारिश से बिगड़ी वीडियो देखी। राजन शर्मा घबराए हुए पहुंचे, बार बार पीछे देखते हुए। टिकट मशीन की तरफ बढ़े, चेहरे पर चिंता। 2 आदमी खंभे के पीछे छुपे, नजरें राजन पर, गहरे कपड़े, चेहरे छुपे, लेकिन चाल ढाल अलग। जैसे ही राजन टिकट कैंसिल करते हैं, दोनों पीछे पीछे बढ़ते हैं। कार्गो बे के पास दोनों ने राजन को घेर लिया। एक तेज हरकत, राजन गिरते हैं, जेबें टटोली जाती हैं, दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कैमरे ने राजन के आखिरी पल कैद कर लिए। अब अमृत के पास अपराध की पूरी तस्वीर थी। सीसीटीवी फुटेज ने अमृत को अपराधियों तक पहुंचा दिया। दोनों की कदकाठी, चाल ढाल विक्रम सिंह के पुराने गुंडों से मिलती थी। घंटों की तुलना के बाद एक की पहचान शंकर के रूप में हुई, विक्रम सिंह का भरोसेमंद आदमी। कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला वारदात की रात शंकर जंक्शन के आसपास था और विक्रम सिंह के असिस्टेंट से बात कर रहा था। अमृत ने शंकर को रूटीन पूछताछ के नाम पर बुलाया। पूछताछ में शंकर ने पहले इनकार किया, लेकिन सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए गए। अमृत ने झूठा कहा कि उसका साथी कबूल कर चुका है। डर के मारे शंकर टूट गया। उसने कबूल किया, विक्रम सिंह ने ही राजन की हत्या का आदेश दिया था। अब पुलिस के पास कबूलनामा, फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स थे। अमृत ने जाल बिछा दिया था। असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने का रास्ता साफ था। अब कार्रवाई का वक्त था। शंकर के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तड़के विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया। शहर में हड़कंप मच गया। सालों से अजेय ठेकेदार अब सलाखों के पीछे था। मीडिया ने इसे न्याय की जीत बताया। अमृत की टीम को सलाम किया। कोर्ट में सबूतों का पहाड़ था, पेन ड्राइव, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, कबूलनामा। विक्रम सिंह और उसके गुंडों को उम्र कैद हुई। अखबारों की सुर्खी थी, व्हिस्लर ब्लोअर को इंसाफ मिला। शहर ने राहत की सांस ली, मानो बड़ा अपराधी हमेशा के लिए गया। लेकिन सवाल बाकी था, क्या यही अंत है? सिस्टम जिसने विक्रम सिंह को पनपने दिया अब भी मौजूद है? क्या असली गुनहगार पकड़े गए या सिर्फ एक सिर गिरा? राजन के सबूतों से जिनका सबसे बड़ा नुकसान होता वो अब भी आजाद है। शायद ये अंत नहीं, एक और खेल की शुरुआत है। और जवाब अब भी बारिश के बाद की भीगी हवा में तैर रहा है।